कहानी का एंड हो जाता है इस तरीके से। तो कुछ क्वेश्चन आंसर इसमें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें बुक में, There are moments in life when we have to make hard choices between our roles as private individuals and as citizens with a sense of national loyalty. Discuss with reference to the story you have just read. कई बार ज़िंदगी में इस तरह के पल आते हैं जब हमें मुश्किल फैसले करने होते हैं, एक व्यक्ति होने के नाते, एक इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल, एक इंसान होने के नाते और देश का नागरिक होने के नाते। तो कहानी के संदर्भ में आप बताएं कि इन दोनों में क्या द्वंद्व है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है दोनों सिचुएशंस में। तो ऐसा कहानी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सदाओं के सामने ये दिक्कत थी, ये दुविधा थी। एक नागरिक होने के नाते, जापानी नागरिक होने के नाते उन्हें सौंप देना चाहिए था अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को, और एक इंसान होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते उन्हें उनकी जान बचानी थी। तो इस तरह की एक हार्ड चॉइस थी, बड़ा मुश्किल था फैसला करना डॉक्टर के लिए। It was a very difficult choice, being a human being and a doctor. It was his duty to save life of an enemy. On the other hand, being a true Japanese, being a faithful Japanese, being a loyal Japanese, it was his duty to hand over the enemy to the police. But how could he resolve this conflict? He had to do something, he goes in favor of humanity. So simply it means that he was a good human being. This human instinct dominates his other self, being a loyal Japanese. So this is how he resolves this conflict, being a human being, that predominates his other self, the self as a citizen, as a Japanese citizen, So he, being a human being and a doctor, he performs his duty not only as a doctor but as a human being. So that way he proves himself to be an essentially good human being. That predominates, that self, that aspect of his personality, being human, that proves to be stronger than being a loyal citizen of Japan. Second question है, Dr. Saddam was compelled by his duty as a doctor to help the enemy soldier. डॉक्टर होने के नाते मजबूर था, ड्यूटी थी उसकी दुश्मन के सिपाही की मदद करना. What made Hannah, his wife, sympathetic to him in the face of open defiance from the domestic staff? लेकिन हैना के सामने क्या मजबूरी थी? नौकरों ने तो बगावत कर दी थी, डिफाइंस. हैना के सामने क्या मजबूरी थी? तो हम इसमें कह सकते हैं कि भाई हैना के सामने मजबूरी तो कुछ विशेष नहीं थी, लेकिन विचार मेल खाते थे अपने हस्बैंड. उनके हस्बैंड एक अच्छे इंसान और एक अच्छे डॉक्टर थे. तो हैना और डॉक्टर साहब का एक प्रेम विवाह था, लव मैरिज थी, दोनों में परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग थी, दोनों गुड ह्यूमन बीइंग थे. तो हैना भी अपने हस्बैंड के साथ थे इस नेक काम में. इंग्लिश में कहें तो डॉक्टर वॉज कंपेल्ड एज ए डॉक्टर, इट वॉज हिज ड्यूटी टू सेव अ ह्यूमन लाइफ, बट हैना ऑल्सो she supports her husband in this act of kindness because she was also a good human being. There was perfect understanding between the two. It was a love marriage in which they were involved. So both of them essentially were good human beings. So they have common ideas regarding humanity. So that is how Hannah also, Hannah helps her husband. अगला प्रश्न है, how would you explain the reluctance of the soldier to leave the shelter of the doctor's home even when he knew he couldn't stay there without risk to the doctor and himself? भाई प्रिजनर को पता था, टॉम को, कि रिस्क है उसके वहाँ रहने से डॉक्टर के घर में, लेकिन जाना नहीं चाहता था, रिलक्टेंट था, अनिच्छुक था घर को छोड़, जाना नहीं चाह रहा था. क्यों ऐसा था? तो हम कहेंगे कि भाई वो
सुरक्षित महसूस कर रहा था। उसे भरोसा हो गया था कि डॉक्टर एक एक्सपर्ट है और वो उसकी जान बचा सकता है। बाहर तो दुश्मन देश है, कोई पता नहीं क्या हो सकता है, ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इंग्लिश में कहें तो ही फील्स सेफ एट डॉक्टर्स हाउस बिकॉज द डॉक्टर is the one who has saved his life. Doctor has proves to be his savior, and it's quite natural to feel secure, at a person's home who has saved his life. And he could communicate with him in English because Doctor and Hannah, both have been to America, so he is able to communicate. He is able to understand their language. So Tom develops confidence in them. He develops trust in them because they were the saviors. They were the ones who saved his life. He thought outside. He never knows what might happen to his life. After all, he is living in an enemy country. Anything could happen to him in that atmosphere. He might be taken as a prisoner, he might be killed, or anything like that. And then he thinks, the location is also quite favorable to him. The house is at seashore, so he can escape from there with the doctor's help. So that is how. Third, अगला इसमें fourth question है, what explains the attitude of the general in the matter of the enemy soldier? General का क्या attitude है? Was it human consideration, lack of national loyalty, dereliction of duty, or simply self-absorption? जनरल ताकीमा जिस तरह से जो उनका दृष्टिकोण है, उनकी समझ है एनिमी सोल्जर के प्रति, उसके बारे में क्या कहेंगे? कैसे वो चाहते थे अपने असैसिन्स, अपने हत्यारों को भेजना, मार देना चाहते थे, मरवा देना चाहते थे, लेकिन भूल गए। क्या पता लगता है कि जैसा उन्होंने किया किस वजह से किया? क्या ये एक इंसानियत के नाते उन्होंने ऐसा किया, अच्छे इंसान होने के नाते, या फिर वो एक नेशनल लॉयल्टी के चलते? नेशनल लॉयल्टी नहीं थी उनमें, देश के प्रति वफादारी नहीं थी इसलिए, या फिर ड्यूटी ठीक से नहीं करी उन्होंने अपनी एक जनरल होने के नाते, या फिर वो बस खोए हुए थे अपने आप में? तो बड़ा आसान है इसका उत्तर जो है वो बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं था। कोई ह्यूमन कंसिडरेशन बिल्कुल नहीं थी। वो एक इंसान होने के नाते नहीं चाहते थे कि जान बच जाए टॉम की, ना ही ये राष्ट्र के प्रति वफादारी की कमी उनमें थी, ऐसा भी नहीं है। और ड्यूटी का डीरेलिक्शन यानी ड्यूटी ठीक से निभाई, ऐसा भी नहीं कह सकते। सिर्फ वो सेल्फ एब्जॉर्प्शन इसका कारण था। खोए हुए थे अपने आप में ही, अपने आप में ही खोए हुए थे, अपनी बीमारी को लेकर चिंतित थे, और इसी चक्कर में, अपनी जान बचाने के चक्कर में, इसी तरह की चिंता के चक्कर में वो भूल गए इस बात को कि उन्होंने वादा किया था डॉक्टर को अपने प्रोफेशनल किलर्स को भेजकर उसका प्रिजनर का काम तमाम करने के लिए। तो इंग्लिश में कहें तो भाई, this is purely nothing else but simply his self-absorption. General Takima was self-absorbed. He was concerned about his own self only. He was worried about his own safety only. So in that concern, in the state of worry regarding his own health, he forgot to send his assassins to kill American prisoner. He was self-absorbed. He thought of his own safety and well-being only. So he proves to be a selfish person only, concerned about his own health and nothing else. So quite a contrast between his character being a general, his character, and Sadau's character. The contrast has been shown. How Sadao is a perfectly good human being, and on the other hand this general who just thought about himself only. While hatred, next question is, while hatred against a member of the enemy race is justifiable, especially during wartime, what makes a human being rise above narrow prejudices? भाई दुश्मन के प्रति नफरत होना तो स्वाभाविक है, ठीक लगता है, जस्टिफाइबल है, ख़ास तौर से युद्ध के समय तो ज़रूर ऐसा लगता है।
लेकिन किस तरह से इंसान कैसे ऊपर उठ जाता है संकीर्णता से, नैरो प्रेजुडिस से, जैसे कि डॉक्टर के साथ हुआ, कैसे उठ जाता है, क्या है ऐसा? तो भाई इंसानियत है ऐसी, इंसान का अच्छा होना ऐसा है, एक इंसानियत में भरोसा, पूरी पूरी कायनात, पूरी दुनिया एक ही है, इंसान तो एक एक मानव जाति है। इस तरह की फीलिंग्स, धर्म, जाति और जो दूसरी संकीर्णताएं हैं, जो डिविजन्स हैं, जो उनसे ऊपर उठ के इंसान कई बार अपने आप को ग्लोबली एक एक इंसान के तौर पर ही देखता है। तो उस हालात में ऐसा हो सकता है, उस हालात में इंसान जो है वो ऐसा काम कर बैठता है जैसे डॉक्टर ने किया। तो इंग्लिश में कहें तो हम कह सकते हैं कि इट्स ओनली the essential goodness of a human being, his belief in essential humanity, in goodness, human goodness, that can make him do what doctor did for Tom, the American prisoner, the enemy soldier. So being a good human being only, that's how he was an educated person, a doctor. He had, he didn't have those narrow prejudices. He thought in terms of universal brotherhood. He had a broad concept of humanity. He believed in essential human goodness, oneness of humanity. So that's how broadly he thought. This is how he was a different person. He had a different personality altogether. This is how he was different from the servants. Do you think, next question is 6, do you think the doctor's final solution to the problem was the best possible one in the circumstances? क्या ये best possible था? भाई और भी हो सकता था, हो सकता है कि वो उसको हील करने के बाद, उसको स्वस्थ करने के बाद, उसका ट्रीटमेंट करने के बाद वो बता देते, और कोई और तरीका हो सकता था, जैसे कि एक्सचेंज होता है युद्ध खत्म होने के बाद, हो सकता है उस तरह की स्कीम के तहत एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स, उसकी जान फिर भी बच सकती थी। कुछ ऐसी कोई वो पिटीशन ऐसी कर सकता था, रिक्वेस्ट कर सकता था गवर्नमेंट को इस किस्म से, दुश्मन के पार्ट में या कुछ। या फिर अगर आप इसका आंसर इस तरह से दे सकते हैं कि भाई नहीं यही एक बेस्ट तरीका था, तो आप जस्टिफाई कर दें उस रूप में कि डॉक्टर ने एक डॉक्टर होने के नाते जान बचाई, और एक जापानी होने के नाते फिर उन्होंने जनरल को बता भी दिया, तो यही बेस्ट पॉसिबल था। और फिर जब वो जनरल भूल गया तो उन्हें लगा कि भाई उसकी जान बचानी ही चाहिए, तो एट लास्ट ये जो थोड़ा वेवरिंग होने के बाद भी लास्ट में, लेकिन उसकी ह्यूमैनिटी ही जो है वो एक वो पावरफुल साबित होती है, वही डोमिनेट करती है, और वो प्रिजनर की जान, टॉम की जान बच जाती है। तो इंग्लिश में कहें तो यस, this was the best possible solution. Doctor, being a doctor, he saved a person's life, but after that, being a loyal Japanese, he informed the general regarding his act. Now he wanted the prisoner to be to be handed over to the police. So that's how he proves to be a good Japanese. And then when General Takima forgets to fulfill his promise, and for about 3 nights the prisoner remains safe even after 3 disturbing nights for the doctor, and then he realizes that it is the fate, it is the destiny that wants the prisoner to be saved. Destiny is working in favor of the prisoner. Now he decides that he should prepare, he should make preparations for his safe for his survival, for his dispatch to a nearby island. So this is how you can answer this question, that it was the best possible solution. If otherwise, you can answer this question otherwise as well, in different way, that he might have handed the prisoner over to the police, informing everything about him after saving his life. He might have petitioned, he might have requested the authorities that he should after the end of the war, he should
be handed over. He should be exchanged with other prisoners with America, and in this way also his life might have been saved. Does the story remind you of Birth by A.J. Cronin that you read in Snapshot last year? What are the similarities that you can do yourself, reading that, remembering that poem that way? And the last one is, 8th question, is there any film you have seen or novel you have read with a similar theme? तो फिल्में इस किस्म की हो सकती हैं, कोई नॉवल भी, ये भी आप जो है सेल्फ अटेम्प्ट कर सकते हैं. जैसे एक मूवी याद आती है हिना जो है मूवी, जिसमें ऋषि कपूर एक्टर के तौर पर हैं. तो और भी कोई इस तरह की मूवी थोड़ी मिलती जुलती, जैसे बजरंगी भाईजान जो है वो लेटेस्ट मूवी इस किस्म की कुछ ऐसा. तो आप इसको भी इस रूप में यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑल्सो by doing your own research. So that was the end of this video. I hope you enjoyed it, and if you found it useful, don't forget to subscribe to the channel and leave your precious comments in the comment box, and keep on watching for more such videos. Bye for now.